Hello and good evening, everyone, and welcome to my live stream. So, today, as you can see from the thumbnail, we are going to continue with the chapter polynomials, but we are going to follow a different book. So, today we are going to solve the questions of NCERT Exemplar book. Hello, Lily, how are you? Welcome to my stream, Lily. Okay, so in the previous streams, we have covered almost all identities that are going to be needed in this chapter, right? So today we are going to solve few questions. I'm good. I'm fine, Lily, but थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है. Otherwise, I'm okay. Okay then, so let's start. So question number 1 for the day. Find the value of 249 square minus 200 excuse me 248 square. So we are going to find out the value of 249 square minus 248 square. So we will not solve this question directly. That means we are not going to square up 249 and then square up 248 and then subtract. We are going to use our identities here. Okay. So we have 249 square minus 248 square. So the identity which we are going to use is x square minus y square is equal to x plus y into x minus 1. So 249 minus 248. So we are going to rewrite it as 249 plus 248 multiplied by 249 minus 248. So 249 and 248, let's add these two numbers. So this is 7, 9 and 4. 497 into 1. That means 249 minus 248 is 1. So our answer is 497. Dhani said hi. Hello Dhani, how are you? Welcome to my stream. Okay, let's try one more question. My voice may crack up sometimes. I'm not well today. Okay, so I'm sorry in advance. Anyways, if 49x squared minus b is equal to 7x plus half into 7x minus half, then find the value of b. So before I start, a big
Hello and welcome to, let me read out the names. Adarsh 01, Pradeep Bose, Rita Chobe. Okay. Any name? Okay. So welcome to my stream. Dhani says, I am good, sir. How are you? I am good too, Dhani, but I am little bit unwell. Pradeep Bose, I am from Assam. Where are you from? Pradeep Bose. Are you a teacher? That depends. Maths is such a huge subject. I cannot claim to be a teacher. I will forever remain a student of maths. No? But yes, this is my profession. लॉगरिथम का आज पॉलिनोमियल्स कर लेते हैं, फिर कभी लॉगरिथम में आएंगे, ठीक है? नहीं तो आज के स्ट्रीम से हम डेविएट हो जाएंगे ना. श्रीकांत बोड़ा says hi. Hello श्रीकांत. थैंक यू रीता चौबे. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि स्ट्रीम जब ज्वाइन कर ही लिया तो प्लीज़ लाइक माय स्ट्रीम, एंड इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो. सर प्लीज़ आंसर बताओ. कौन सा आंसर? नहीं आदर्श जी, आप कौन सा आपका क्वेश्चन क्या है पहले वो बताइए, मैं ट्राई करूँगा. अगर पॉलिनोमियल से रिलेटेड है तो देखेंगे इसका. अच्छा जी, मैं ये सॉल्व करने ही वाला था, तो बस आप लोग से एक बार बातचीत कर ली. स्ट्रीम को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. ओके, एंड इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. So we have 49x square minus b. So let us write this first. 49x square minus b equals to 7x plus half and 7x minus half. Okay, now this is 49, okay, and x square. I mean, if we are going to break it up in this identity, we will need one square term here, is it? Because we have 49x square, but the b doesn't seem to be in the square form. So what we can do, we can rewrite this. We will rewrite it as 49x square, और इसको हम लोग रूट ओवर b होल स्क्वायर लिख सकते हैं. The reason, ये आई एम जस्ट शोइंग दिस द रफ पार्ट. सो रूट ओवर b इंटू रूट ओवर b. सो दिस इज root over b square, so this is equal to b. So इसको we will rewrite as root over b square. Okay, तो इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ते हैं. 7x plus half and 7x minus half. Okay, so 49x square minus root over b whole square. So this is 7x plus half and 7x minus half. So this can be rewritten as, this is a plus b into a minus b, or whatever you want to say, x plus y, x minus y, whatever. So this will become 7x whole square minus half whole square, is it? So 49x square minus root over b whole square. So 7x whole square is how much? 49x square, and this is minus 1 by 4. Okay, so 49x square on the left hand side and 49x square on the right hand side. So we can cancel them out, and
we have root over b whole square is again b, so we have minus b and minus 1 by 4, so the negative sign gets cancelled as well, so our answer is 1 by 4. So b, value of b is equal to 1 by 4. ठीक है. प्रदीप बोस जी मैं ट्राई करूँगा हिंदी में बोलने के लिए. सोमेश वर्मा सेज हाय. हेलो सोमेश जी, वेलकम. And let me pronounce this name correctly. Please pardon me if I am getting it wrong. Ozen Yeltsin says hi. यानी मेरे अंदाजे वाला आंसर सही था. वेरी गुड. ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, सो जस्ट ओके. सो विल मूव. ओके, तो एक फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन ले लेते हैं. लेट मी जस्ट टर्न टू द न्यू पेज. प्रदीप जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा, बट आज नहीं. आज का स्ट्रीम एकदम डेडिकेटेड है पॉलिनोमियल्स के लिए. ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं. तो आज डेविएट मैं आपके क्वेश्चन का या तो एक शॉर्ट बना के या कम्युनिटी पोस्ट में कैसे भी हो मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा. आदर्श सर, अभी ओलंपियाड का फॉर्म भरा है, उसमें इतने सारे चैप्टर्स हैं. जी हाँ, ओलंपियाड का तो वही एक मसला है. वैसे कब है ओलंपियाड, डेट कब है? This is x cube. Let me rewrite the question. 3x cube minus x square minus 3x plus 1. Okay, so this is a cubic polynomial. Okay, the degree of this polynomial is 3. तो ये एक cubic polynomial है. तो एक तो ये है कि अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो फैक्टराइज करने पर इसके 3 फैक्टर्स निकलेंगे. ठीक है ना. तो ये क्वेश्चन यूजुअली थोड़ा लंबा होता है व्हेन कंपेयर टू अदर फैक्टराइजेशंस. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो लेट अस टेक इसको px. वी आर राइटिंग इट एज px. px is actually nothing but it is a shorter form of polynomial with variable x. ठीक है. So 3x cube minus x square minus 3x and plus 1. So what we have to do, we have to look at the constant term here. तो constant term यहाँ पे 1 है and we have to check the coefficient of x cube if any. Here we have the coefficient. What is the coefficient of 3x cube? Coefficient of x cube. It is 3. Okay, so we'll just multiply 1 into 1 and 3 multiplied is 3. Okay, so 3 is a prime number, so factors of 3 are 1 and 3. Okay, so these factors are plus minus 1 and plus minus 3. Okay, so what we can do, we can try one value at a time. We can check for p1 or p minus 1 and then we will proceed. Or let me write, that will be better. Factors of 3 is plus minus 1 and plus minus 3. So now let's start with p1. That means we will replace all the values of all the x with 1. So this will be 3 into
1 cube minus 1 whole square minus 3 into 1 plus 1. So 1 cube is 1 and 1 into 3 is 3 and 1 square is 1, 3 minus 1. 3 into 1 is 3, this will be minus 3 and plus 1. Okay, so 3 and minus 3 will get cancelled and minus 1 and plus 1 cancel ho jayega. So our answer is 0. So if P1 is equal to 0, then we can claim that x minus 1 is a factor of the polynomial. Or let me write the polynomial of 3x cube minus 3x and plus 1. Okay, so like I said at the start of the question, since this is a cubic polynomial, ये cubic polynomial है, right? So इसमें 3 factors लिखेंगे. So out of the 3, एक तो मिल गया है x minus 1, है ना? तो बाकी 2 को निकालते हैं अभी. So since this is a factor of this polynomial, no, we can divide them and we will get the remainder 0. That we can be very sure. So let us divide 3x cube minus x squared minus 3x and plus 1 divided by x minus 1. So let's start the division. So यहाँ पे है 3x cube, यहाँ पे है x. So यहाँ पे खुद से ही एक सवाल करना होता है कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 3x cube मिलता है. Okay. So this is, we have to multiply 3 and x square, because 3x square multiplied by x gives us 3x cube. So this is 3x cube and 3x square into minus 1 is minus 3x square. Minus 3x square. So we are going to subtract. So while we subtract, I mean, make sure you change the signs. Okay, if this is positive, this will become negative. If this is negative, make it positive. Okay, so 3x square and minus 3x square will get cancelled. That means it becomes 0. Okay, now this is minus x square and ये अभी बन चुका है plus 3x square. That means 3 minus 1. So this is 2x square. Then we'll write the rest 3x plus 1. Okay, now we have 2x square here and the divisor starts with x. So same question, with what you have to multiply x so that you get 2x square. ठीक है, x के साथ क्या multiply करने से 2x square मिलता है. So the answer is, we have to multiply how much? We have to multiply 2x, is it? 2x into x is 2x square and 2x into minus 1 is minus 2x. So this is minus and this is positive. So 2x square and minus 2x square, that means 2 minus 2 is 0, so we will cancel them out. And this is now positive. So this is minus 3 and plus 2, minus 3x and plus 2x. So this will be minus x and plus 1. ठीक है, तो यहाँ पे अभी आ चुका है माइनस एक्स. तो वही क्वेश्चन कि x को किसके साथ मल्टीप्लाई करने से माइनस एक्स मिलेगा. द आंसर इज माइनस 1. यू हैव टू मल्टीप्लाई x विथ माइनस 1 टू गेट माइनस एक्स. सो माइनस 1 इंटू एक्स इज माइनस एक्स. माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस 1. सो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, तो ये साइन चेंज हो जाएगा. सो दिस इज नेगेटिव एक्स एंड पॉजिटिव एक्स विल गेट कैंसल्ड एंड positive 1 and negative 1 will also get cancelled and our remainder is 0. ठीक है, अभी लगभग we have completed should I say 66% of the solution. अभी थोड़ा और करना बाकी है. Okay, so we'll write, therefore, is it visible? Let me just 3x cube minus x square minus 3x plus 1. So do you remember the algorithm, division algorithm? Dividend is equal to divisor into quotient
plus remainder. So we have divisor x minus 1 multiplied by 3x square plus 2x minus 1. Okay, and the remainder is 0, so we won't write plus 0. We'll keep it in this form. अभी ये हमारा है what? This is a quadratic polynomial, or should I say quadratic trinomial. ठीक है, तो इसको we will factorize using middle excuse me, we will factorize this using middle term factorization. तो x minus 1 को ऐसे ही लिखते ही रहेंगे, and okay, so the middle term is 2x, and this constant term is minus 1, and coefficient of x square is 3 minus 3. That means we have to split the middle term in such a way that if we add the factors we get plus 2, and if we multiply the factors we get minus 3. So this is a very easy combination. So 3x square plus 3x minus x plus, sorry, minus x and minus 1. Sorry. Plus x and minus 1. Okay. Minus, did I write ulta? I think I wrote just the ulta. So this is plus 2x and minus x. Extremely sorry. So 3 minus x is, I mean, positive plus 3 and minus plus 3x and minus 2x will give us plus 2x, and 3 into minus 1 is minus 3. Okay, so these are our factors. X minus 1. So take out 3x as the common factor. Okay, and then यहाँ पे बचेगा x plus 1, and out of these two terms we can take out the minus 1, and then we will have x plus 1. So our answer will be x minus 1, 3x minus 1, and x plus 1. So these three are the factors of this polynomial. Three x cube minus x square minus 3x and plus 1. So like I said, this type of factorizations are usually very long. Okay. Shiksha Sankalp with success. Welcome Shiksha Sankalp with success. Quite a tongue twister. Welcome to my stream. So at present there are around 20 views but only 9 likes. तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ स्ट्रीम को लाइक कीजिए, एंड इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. ओके, सो लेट मी फाइंड वन मोर क्वेश्चन. Okay, let's do this one. I'm just taking a new page. I just lost the track of what the question number should have been, so I'm writing a question. Okay, please don't mind. Okay, find the product. Find the following products. Okay. Yasir, x equal to 1 is a factor, not x minus 1. No, x minus 1 the factor, because if we divide the polynomial by x minus 1, then the remainder happens to be 0. Okay.
x by 2 plus 2y, x square by 4 minus xy plus 4y square. ओके, सो इसका अभी प्रोडक्ट निकालना है. वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोडक्ट. सो x by 2 plus 2y, x square by 4 minus xy plus 4y square. शशि रंजन सर समझ नहीं आ रहा है. अच्छा, कौन सा समझ में नहीं आ रहा है शशि जी? कैन यू प्लीज स्पेसिफाई? अगर ये वाला समझ नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा वेट कीजिए. लेट मी सॉल्व इट. सर ये क्वेश्चन मैंने करवाए थे स्टूडेंट्स को क्लास 9. सर ये क्वेश्चन मैंने करवाए थे स्टूडेंट्स को क्लास 9 के स्टूडेंट्स को. पंजाब करिकुलम की पुरानी बुक थी, यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.4. जी जी, क्वेश्चंस देखिए यहाँ वहाँ से रिपीट हो सकते हैं. हाँ वो क्योंकि देखिए अभी मैं बुक ही दिखा देता हूँ आपको. तो ये तो है और थंबनेल में भी देखा ही होगा. सो आई एम फॉलोइंग दिस वन NCERT Exemplar. ओके, तो क्वेश्चंस आप ये क्वेश्चन आप NCERT की टेक्स्ट बुक या फिर RD शर्मा RS अग्रवाल यहाँ वहाँ कभी कहीं भी मिल भी सकते हैं. सो दैट इज क्वाइट कॉमन. अच्छा, आप टीचर भी हैं यासिर जी? शशि रंजन जी, इफ़ यू कैन प्लीज स्पेसिफाई क्या समझ में नहीं आ रहा है और आई विल प्रोसीड विद दिस सॉल्यूशन. Okay, so let's proceed. So x by 2 plus 2y. So we will rewrite these three terms. Okay. So x square by 4 we will rewrite as x by 2 whole square. ठीक है. Let me put a gap. मैं गैप अभी फिलहाल छोड़ के जा रहा हूँ. सो 4y स्क्वायर इज 2y होल स्क्वायर. ओके, सो ये बीच का टर्म क्या होगा? दिस इज x by 2 into 2y. ओके, बिकॉज इफ वी जस्ट सी इट इन द रिवर्स वे, उल्टा अगर देखेंगे तो ये 2 और 2 गेट्स कैंसल आउट एंड देन वी हैव xy minus xy. So if we can recall, this is identity a plus b, a square minus ab plus b square, which is equal to a excuse me, which is equal to a cube plus b cube. Is it? So this will become x by 2 whole cube plus 2y whole cube. So our answer will be x by 8 plus 8y cube. Okay, Asif. बट थैंक यू, आप जुड़े स्ट्रीम से, जुड़े रहिए. अभी और है आधा एक घंटा करेंगे. और आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. x square minus 1
x to the power 4 plus x square plus 1. फॉर्मूला में क्लोज करना है, जी जी जी, फॉर्मूला में ही क्लोज करना है। एक्चुअली मैं पिछले 7-8 दिनों से लगातार स्ट्रीम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने ये आइडेंटिटीज़ वगैरह डिस्कस किए हुए हैं। सो आज सोचा कि लेट्स थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसीलिए रैंडमली क्वेश्चंस पिक कर रहा हूँ एंड आई एम सॉल्विंग इट। वही बात है। आप कहाँ से हैं यासिर भाई? Okay. So x square minus 1, we will write it as x square minus 1. Okay. So x to the power 4 can be written as x square whole. Okay. And then a gap छोड़ के 1 whole square and then x square into 1. So this is a minus b whole cube identity, is it? A minus b, a plus ab plus b square is equal to a cube minus b cube. So this will become x square whole cube minus 1 whole cube, and our answer is x to the power 6 minus 1. Islamabad, Pakistan. Oh, welcome, welcome, welcome. पहली बार शायद बाहर से कोई ज्वाइन हुए हैं मेरे स्ट्रीम में, तो आपको डबल वेलकम। So let me turn to a new page and with a new question. Without actually calculating the cubes, find the value of I hope my handwriting is readable. बहुत ही गंदा लग रहा है हैंडराइटिंग। ओके, okay. So it is strictly specified in the question without actually calculating the cube. So we cannot just excuse me. So we cannot just calculate 1 by 2 whole cube plus 1 by 3 whole cube. Okay, we will have to use proper identity to solve this. Okay, so what we'll do, we will assign 3 variables to each of these. Okay, we'll assume let a b c x y z p q r कुछ भी ले लीजिए, whatever you like. So let 1 by 2 equals to x, 1 by 3 equals to y, and 5 by 6 equals to z.
Now let's add them up. X plus y plus z. Okay, और शुड वी डू वन थिंग, एक काम करते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी. सो वी हैव 1/2 whole cube plus 1/3 whole cube minus 5/6 whole cube. So what we can do, we can just write this part as, yes, this will be better. Okay, so plus लिख के minus. Okay, so this will be minus 5/6. So x plus y plus z is how much? 1/2 plus 1/3 plus minus 5/6. So this is 1/2 plus 1/3 minus 5/6. Abhi we have to find out the LCM of 2, 3 and 6. So 2, 3 and 6, LCM of 2, 3 and 6 is 6. It's very obvious. So 2 multiplied by 3 is 6. So we have 1/3. So 1 into 3 is 3. Okay. 3 multiplied by 2 is 6. So we will multiply 1 with 2. So this is 2. And we don't need to multiply anything. 6 into 1 is 6. So 5 into 1 is 5. So this is 5 minus 5 by 6. So we have 0/6, which is equal to 0. Okay. Now, if you remember the identities, or if you joined my live stream from yesterday, so this was the last identity that we discussed yesterday, right? So what was the property? If x plus y plus z is equal to 0, if x plus y plus z equals to 0, then x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. Okay. So we will replace these values x, y and z. So therefore, so what is x? X is half. So half cube plus y. Y is how much? 1/3. 1/3 cube. And z. Z is how much? Minus 5/6 plus minus 5/6 is equal to how much? 3 into x, y, z. That means 3 into half into 1/3 into minus 5/6. Okay. So therefore, or I have already written a therefore. So half cube plus 1/3 cube minus 5/6 cube is equal to how much? 3 into half into 1/3 into minus 5/6. 3 and 3 will get cancelled. So our answer is minus 5/12. Okay. So let's do one thing. Let's solve some long answer type questions. If both x minus 2, if both x minus 2
and x minus half are factors of px square minus 5x plus r, then show that p is equal to r. Let me read out the question once again. If both x minus 2 and x of px square plus 5x plus r, then show that p is equal to r. Okay. Yeah, sir, you are doing an excellent job. Before discovering your channel, I had seen many other where girls and women were talking nonsense. But you are building a future of students. Thank you so much, Yasir, for your lovely words. This is just the beginning. I hardly have 1200 subscribers. But I'm sure, yeah, I truly appreciate. Thank you so much. There are some people in this world who are teaching very good things. You are one of them. Thank you, Yasir bhai. Thank you so much. If you have students, you can recommend them my channel. In fact, my YouTube analytics show that part of my views also come from Pakistan. So I'm really glad that my channel is also growing outside India. So that is a big encouragement for me. And Baki, I don't believe in cracking all kind of jokes in between, and which most teachers now, I mean, they use this as a tool of attracting students, but I don't prefer that. पढ़ाई के टाइम पढ़ाई है ना. Okay. So we have been given that these two, x minus 2 and x minus half, are factors of px square plus 5x plus r. So first of all, let's do one thing. We'll assume, let px, you may take px, rx, qx, whatever you want to. Okay, I'm just taking px. So this means that the polynomial with variable x, px square, and we have been told that these two are the factors. I mean, both these two terms, I mean x minus 2 and x minus half, are factors of px square plus 5x plus r. So we know when one polynomial is a factor of other polynomial, then if we divide them, the remainder is 0. That's what happens when one polynomial is a factor of the other polynomial, is it? So we have x minus 2. So what we can do, okay, we'll just write this information in the solution. X minus 2 and x minus half are factors of px square plus 5x plus r. So if x minus 2 and x minus half are factors, then p2 will be equal to 0 and p1 by 2 will also be equal to 0, is it? So therefore we can write p2 will be equal to 0 and p1 by 2 is also equal to 0. Okay? So we will proceed with this. Then p2 means we will replace all the x with 2. So I will just put an implies sign here, or let me do one thing, let me write it first. P into 2 whole square plus 5 into 2
plus r. So this is equal to 0. So I will put an implied sign here. So we'll have 2 into 2 is how much? 2 into 2 is 4 p. Then 5 into 2 is 10 and plus r is equal to 0. So we'll name this as equation number 1 or statement number 1, whatever. Equation will be more appropriate. So we'll put it as equation number 1. And p half is also equal to 0. No? So we'll replace all the x with half. So this is p into half whole square plus 5 into I will just take 1 minute. Plus r is equal to 0. So 1 by 2 whole square, 1 by 2 whole square is 1 by 4. So this is p into 1 by 4. So we can write it as p by 4 if we want, is it? And then 5 into half is how much? 5 by 2. And this is plus r equals to 0. So okay, we have denominator 4, we have denominator 2. So let's take LCM. So the LCM will be how much? LCM will be 4, is it? So we don't need to multiply anything to p. Okay, this will be p. 2 into 2 is 4. Multiply 5 with 2. So this will be 10. And this will be denominator of r is 1. We'll assume this is to be the denominator to be 1. So 1 into 4 is 4. So we'll multiply r with 4. So this will be 4r. Equals to 0. So we can transpose this. So p plus 10 plus 4r. So this will be 0 into 4, which will give us 0 again. So p plus 10 plus 4r is equal to 0. So this will make our equation number 2. So let's have a look at both the equations. The right hand side is equal to 0. Right hand side of both the equations are 0. So that means if the right hand side is equal to 0, left hand side will automatically become equal to 0. So we'll write from 1 and 2, from equation 1 and 2, that means, okay. So 4p plus 10 plus r is equal to p plus 10 plus 4r. Okay, so we have 10 on the left hand side, 10 on the right hand side. So these two will get cancelled. So now we can transpose this p here and this r here, RHS, so that the terms with same variables remain on the same side. So this will become 4p minus p and ये बन जाएगा 4r minus r. So this is 3p minus 3r. So if we cancel out the 3's, we will get p is equal to r. So this is what we are required to prove. Is it visible? Yes, this is visible. Okay, so we'll move to a few more questions. Let me just check the time. Okay, it's almost 12 midnight. ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं and then we will wrap up today's stream.
simplify. So let's simplify them. Okay, so we have to simplify 2x minus 5y whole cube minus 2x plus 5y whole cube. So this is very clearly which identity? X cube minus a cube, or x cube minus y cube, or you may say a cube minus b cube, which we already have discussed. Hello Revant. So आज तबीयत ठीक नहीं है रेवंत. I am not well, so but still I decided to कल ऑफ ले लिया था, बट रहा नहीं गया, फिर से आ गया स्ट्रीम में. Okay. So just like the previous question, we will assign another variable to these two terms. Okay. So let 2x minus 5y equals to a and 2x plus 5y equals to b. Then if we replace the values, so this will become a cube minus b cube. I will just take a minute, okay? Okay. So a minus b क्या होता है? This is a minus b, a square plus ab plus b square. So now we will replace the a and b with these values. Okay. So मैं ज़रा साइड से लिख रहा हूँ, otherwise. So a is 2x minus 5y, and we have minus, so we need to be careful. Minus 2x plus 5y. And then a whole square, meaning 2x minus 5y whole square, a into b, 2x minus 5y into 2x plus 5y, and then b square, 2x plus 5y whole square. Okay. तो अभी this is 2x minus 5y
and minus 2x, minus into excuse me, minus into 2x is minus 2x, and this is minus 5y. And then this is in the form of a minus b whole square or x minus 5 whole square, whatever you want to say. So this is 4x square minus 2 into ab, that means 2 into 2x into 5y. So 2 into 2 is 4, 4 into 5 is 20, minus 20xy plus 25y square. Okay. So this is 2x plus 5y, 2x multiplied by 2x minus 5y. So this is a plus b into a minus b. So this is 4x square minus 25y square. Okay. And then we have 2x plus 5y whole square. So this will be 4x square plus 2 into 2 is 4, 4 into 5 is 20xy plus 25y square. Okay. So ये positive 2x and negative 2x will get cancelled. Then anything else? Minus 20xy and positive 20xy will get cancelled, and then minus 25y square and positive and negative will get cancelled. So यहाँ पे आएगा minus 10y, and then we'll have 4x square, 4x square and 4x square. 4 into 3 is 12, 12x square. তাৰপিছত আৰু কি আহিব 25y square. Is it 25y square? So we can multiply these two terms. So this will be how much? Minus 120x square y. 10 into, minus 10y into plus 12 is minus 120 x square y and minus 250 y. मुस्कान भाई मेरा एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करवा दो प्लीज़. हेलो भाई. मुस्कान आज हम लोग पॉलिनोमियल्स में लगे हुए हैं, वो भी क्लास 9 का. तो आपका क्वेश्चन अगर क्लास 9 पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड है तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट. अदरवाइज आप मेरे किसी भी क्वेश्चन, ओके आपने क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस इसको फैक्टराइज करना है. टू एक्स स्क्वायर, लेट मी राइट द क्वेश्चन मुस्कान. Okay, for the other viewers, I am just trying to solve the question given by द्विघात समीकरण. Okay. So we have 2x square plus x and minus 6. अच्छा मुस्कान, मैं पहले एक बात बता देता हूँ, मैं हिंदी मीडियम के टर्म्स से इतना वो नहीं हूँ. मैं यूजुअली आई टीच इन इंग्लिश मीडियम, तो अगर हिंदी में टर्म्स वो है तो अच्छा श्रीधर आचार्य, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ना. मैं वही बात बता रहा था आपको, है ना. तो ये मैं पॉलिनोमियल्स के नियम से आपको यहीं पे दिखा सकता हूँ. अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो हम इससे आज थोड़ा डेविएट हो जाएंगे. ठीक है ना. आई होप आप समझ सकती हैं.
बट इसको करना ही क्यों है अगर ये मिडिल टर्म से हो ही जाता है इतने आराम से, है ना। मैं ये ज़रूर आपका क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है, मैं इसको या तो शॉर्ट में या फिर कम्युनिटी पोस्ट में कहीं तो ये पोस्ट करूँगा। फिर अब आज के स्ट्रीम में ये नहीं हो पाएगा मुस्कान, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आई एम ग्लैड कि आपने पूछा। तो मैं ये एक बार ये फैक्टराइजेशन से दिखा ही देता हूँ आपको, ठीक है। ये सॉल्व कर ही लिया है मैंने, तो आप देख सकती हैं, ठीक है। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट करने से बहुत बढ़िया से हो जाता है। सो फैक्टर्स लिए हैं हमने 4 एंड 3, 4x और 3x, क्योंकि 4 माइनस 3 हो गया है x, और 4 इंटू 3 करने से -12 में आ जाता है ना। तो ये तो खैर बहुत ईजी है, बाकी वो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। RK says hi and okay, so hi and okay RK। आप सबसे निवेदन है कि स्ट्रीम को एक बार लाइक कर लीजिए, और अगर चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं ट्राई करता हूँ हर रोज़ लाइव आने की, बस कल नहीं हो पाया था, और आज भी एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है, बट स्टिल आई डिसाइडेड टू कम लाइव। ओके, लेट्स डू वन थिंग, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड देन वी विल एंड टुडे स्ट्रीम। इफ आई कैन जस्ट टेक 2 minutes, आई विल जस्ट गो एंड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं 1 घंटे से नॉन स्टॉप बात कर रहा हूँ, सो प्लीज़ एक छोटा सा वाटर ब्रेक। Okay, let's continue. If a plus b plus c and ab plus bc plus ca equals to 10, then prove that
a cube plus b cube excuse me plus c cube minus 3abc equals to minus 25. ओके, सो हमें यहाँ पे दिया गया है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 5, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 10, देन हमको ये प्रूव करके दिखाना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 25. सो लेट्स राइट, पहले जो दिया रहता है वो लिख लेंगे. गिवन a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 5 and ab plus bc plus ca equals to 10. अच्छा, now if we can recall this identity a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, तो उसमें क्या आता है? We have, or should I write it somewhere? Let me write it, that will be better. This is just the rough part, okay? So a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. तो ये आइडेंटिटी काफ़ी लंबा है, राइट? तो हम लोग क्या लिखेंगे? a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी. तो दिस इज द होल आइडेंटिटी. नाउ इफ वी लुक एट कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, वट एवर इज आई मीन गिवन टू अस, वी हैव a प्लस बी प्लस सी एंड वी हैव ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एंड यहाँ पे है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. तो ये तो वैल्यू निकाला जा सकता है इसमें से, बट वी डोंट हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इज इट? सो व्हाट विल डू, विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ओके, नाउ अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, सो इफ वी स्क्वायर बोथ द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, अगर दोनों साइड को स्क्वायर कर दें, सो दिस विल बिकम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर. इफ यू वांट यू कैन राइट स्क्वायरिंग LHS एंड RHS और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कुछ भी लिख सकते हैं. ओके, सो ये अभी दूसरी आइडेंटिटी हो गई. दिस इज द न्यू आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. तो ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca एंड 5 स्क्वायर इज 25. ठीक है, नाउ वी हैव ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 10, राइट? एंड यहाँ पे अगर देखें तो 2ab 2bc और 2c, सो हम लोग 2 को एज कॉमन फैक्टर ले लेंगे एंड वी विल राइट 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए which is equal to 25, and then we will put the value here. So a square b square c square, a square plus b square plus c square is equal to 2 into 10 equals to 25. So 2 into 10 is how much? 20. So this will be 5. I mean 25 minus 20 is 5. Sorry, this is 25 minus 20. ओके, अभी सारे के सारे वैल्यूज मिल चुके हैं हमें. वी हैव a प्लस बी प्लस सी, वी हैव ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एंड नाउ वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सो देयरफॉर अभी हम लोग प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे. सो LHS,
what is LHS? LHS is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. So this is equal to a plus b plus c. A square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c. ठीक है? So this is a plus b plus c. A square plus b square plus c square, and since these three terms are negative, so हम लोग negative term को as common factor ले लेंगे, and then ab plus bc plus ca. And now we will replace excuse me, these values. A plus b plus c is how much? 5. 5 multiplied by what is a square plus b square plus c square? Okay. So this is how these types of questions are done. So yes, it's 20 minutes past 12. So 1 घंटा 12 मिनट हो चुका है live stream. So let's wrap it up for today. We will come live tomorrow again. So before ending my stream, एक बार सभी viewers को बहुत बहुत thank you. अभी भी 6 viewers जुड़े हुए हैं. There are still 6 viewers I can see. So thank you for staying this late. And इसी तरह आपका प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए. आई विल ट्राई टू कम लाइव एवरी डे और ट्राई करेंगे अलग अलग टॉपिक्स को कवर करने की. मीनवाइल यू कैन शेयर दिस लाइव स्ट्रीम विद योर फ्रेंड्स. दिस स्ट्रीम व्हेन दिस स्ट्रीम एंड्स द वीडियो विल गेट अपलोडेड ऑटोमेटिकली. सो आप लोग चैनल में जाके जो लाइव का पार्ट है, एक होता है वीडियोस का, एक होता है शॉर्ट्स का और एक होता है लाइव का, तो उसमें ये वीडियो अपलोड हो जाएगा. अगर कुछ छूट भी गया है तो यू कैन जस्ट गो थ्रू द वीडियोस, ओके, एंड यू कैन share it with your friends, family members, relatives, students. So thank you once again to all my viewers for joining in today. Take care and good night. Bye bye.